So thank you very much for that. And also, before I proceed further, I would also like to thank the Malviya Mission Teachers Training Center at Sant Gadge Baba Amravati University, and especially Professor Muhammad Atiq sir for inviting me and giving me this opportunity to share some of my understanding on this very important topic. So beforehand, I should make it very clear, like I am not an expert in Indian knowledge systems, and it is pervading, I think, each and every discipline. I'm here just to share some of my understandings about why Indian knowledge systems is so important and it is so relevant, and why it has to be inculcated or included in our curriculum, right? So, before I proceed further, I would also like to know from the participants whether I should continue in English or should I be bilingual, a mix of Hindi and English. Participant, please, anyone can confirm. Bilingual, ma'am. Bilingual, okay. ठीक है. And also, like, the participants are from science and technology, or it is a mix of. Ma'am, they are from the science and technology, Ayurveda, and the pharmacy. Three Okay, different pharmacy. colleges are there. Okay. Okay, yeah, okay, thank you. So, like, before I proceed further, I would just like to give you a glimpse of the university where I am presently associated with. That is Pandit Ravi Shankar Shukla Vishwavidyalaya, which is located in the capital city of Chhattisgarh. And one more purpose for sharing this screen with you is to share the motto of our university. The motto of a university, it is taken from one of the verses of ईशा उपनिषद का एक श्लोक है, उससे लिया गया है, और जो कहता है अग्ने नये सुपथा राय. और अगर हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो इट मीन्स कि ओ फायर लीड अस ऑन अ वर्चुअस पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, कि हे अग्निदेव या हे स्वप्रकाश, हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग पर ले चल. So I think this is the basic purpose with which we all are working as teachers in our respective institutions. चाहे ये हमारा मोटो है हमारी विश्वविद्यालय का, लेकिन ये शायद हम सभी टीचर्स के लिए, हम कहीं पर भी कार्य कर रहे हों, हमारा बेसिक उद्देश्य यही रहता है कि हम ना केवल अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करें, उनको एम्पावर करें, बट एट द सेम टाइम हम उनमें कुछ वैल्यूज हमको ऐसी डालनी जरूरी है ताकि वो प्रोफेशनली किसी भी अरेना में जाएं, कहीं पर भी काम करें, वो अपने सन्मार्ग को या जो वर्चुअसनेस है उसको ना छोड़ें. नाउ अगर हम देखें कि इंडिया की नॉलेज ट्रेडिशंस जो हैं, ये एक बहुत रिच ट्रेजर है, एक बहुत रिच रेपोजिटरी है, और ये जो धारा है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की, ये अविरल रही है, अनइंटरप्टेड रही है. और राइट फ्रॉम द वेदास, ये उपानिषद की हम जब बात करते हैं, से अरबिंदो तक, और आज भी अगर हम देखें कि हमारे इंडिया के जो नॉलेज सिस्टम्स रहे हैं या जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, उसमें इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है. और इसीलिए हम देखते हैं कि जब इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस की जब हम बात करते हैं, सो देर आर बेसिकली थ्री टर्म्स विच आर यूज्ड. One is the darshana, then second one is the jnana, and third one is the vidya. कई बार हम देखेंगे कि द ट्रांसलेशन, अगर हम इफ यू ट्राई टू ट्रांसलेट दीज वर्ड्स और दीज टर्म्स इनटू इंग्लिश, हमको शायद करेक्ट ट्रांसलेशन हमको नहीं मिल पाएगा, बट द क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन इफ यू गो बाय, तो जब हम दर्शन की बात करते हैं, दर्शन यानी कि फिलॉसफी, यानी कि जिस नजरिए से हम देख रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू विच इज लीडिंग टू ज्ञाना या नॉलेज. और जब नॉलेज हम किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में हम उसको एक्वायर करते हैं, उसको एक सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं किसी एक पर्पस के लिए, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको अपनी आगे वाली जनरेशन्स को हम पास ऑन करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, तो उसको हम विद्या या डिसिप्लिन कहते हैं.
तो अगर जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की अगर हम बात करें कि व्हाई इट हैज बीन, आज देखें कि अ, ये सिस्टम तो हमारा रहा ही रहा है, लेकिन विथ द नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये टर्म अब हम सबके जबान पर आ गया है, एंड एवरीवन एंड एवरीवेयर वी आर हियरिंग अबाउट दिस टर्म. नाउ व्हाई और व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस, और इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि कई ऐसे नॉलेज ट्रेडिशंस हैं या ऐसे बहुत सारे नॉलेज रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं देर हैज बीन अ लॉस इन दी पैसेज, है ना, और जिसके कारण मेनी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन और has been lost, है ना. So that is the basic purpose, and that is why also the national education policy has also stressed upon कि इंडियन सोसाइटी जो रही है ये एक नॉलेज का खजाना रहा है, और ये जो नॉलेज का हमारा ट्रेजर है, दिस हैज बीन एक्वायर्ड और दिस हैज बीन गेन्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, एंड this is manifested in all the formats, you can say, whether we say in the arts or the literature, in the traditions, in the customs, in the languages, in the architecture, in the medicines, in the foods we consume, and this is evident everywhere. And whatever these ancient practices were there, and these were not something which was introduced in the recent times or by one person, but over the centuries, you can say, this has been passed down from one generation to another. And mostly there is no written literature, you can say. This has been passed on through oral traditions, or the proof of which we can find in the architecture, right, in the customs, in the art forms, in the in other traditions also. But during the last, you can say, decades or this intergenerational transfer जो नॉलेज का होता है, कहीं ना कहीं उसमें एक ब्रेक आया है, और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स माने जाते हैं, और ब्रिटिश का जो टाइम रहा, that has also been said has contributed to this loss in continuity. And that is why you will see that in the NEP it is laying special emphasis कि हमें अपने हायर एजुकेशन के जो सिस्टम है उसमें, उसके थ्रू जो इंडियन लैंग्वेजेस है, आर्ट्स है, कल्चर है, साइंस है, उसको हमको प्रमोट करना है, और उसको किसी ना किसी तरह से हमको अपने करिकुलम में उसको इंटीग्रेट करना है. एंड दिस इंटीग्रेशन हैज टू बी एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन. एंड दिस एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब हम बात करते हैं एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन की, इसके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं. देर आर स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व, देर आर पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, देर आर द एम्प्लॉयर्स आर इन्वॉल्व, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर, आई शुड से, दे आर द faculty members. So, how successfully we are implementing the various provisions of the NEP, and how we are doing justice to the incorporation of IKS in our system, that heavily rests upon the shoulders of the teachers at various colleges and universities. So, this is not what I am observing, but this is what has been observed in the UGC guidelines for training of the faculty on IKS 2022. You can go to the UGC website and you can just follow and download and go through it, like what are the ways in which we can introduce the IKS into our curriculum. Now, whenever we are talking about, जब भी हम बात करते हैं कि हमारा बहुत नॉलेज ट्रेडिशन बहुत रिच रहा है, तो कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन ऐसा जाता है कि हम अपनी ही तारीफ अपने ही मुंह से कर रहे हैं. लेकिन जब यही बातें अगर हमको कोई एमिनेंट और कोई साइंटिस्ट हो या वेल रिनाउंड पर्सन अगर कहता है, सो वी हैव टू बिलीव इट, उसकी क्रेडिबिलिटी शायद और बढ़ जाती है.
तो उसी कंटेक्स्ट को लेते हुए आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर दिस कोट बाय अल्बर्ट आइंस्टीन, who needs no introduction, who said that we owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made. And नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में भी इस बात को मेंशन किया गया है कि जो पॉलिसी बनाई गई है उसका जो एक इंस्पिरेशन रहा है या उसकी जो गाइडिंग लाइट रही है, दैट हैज बीन द हेरिटेज ऑफ एंशियंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज सिस्टम। और इंडियन फिलोसफी या इंडियन थॉट एंड फिलोसफी की जब हम बात करते हैं, हमारे में ये हमेशा नॉलेज या ज्ञान या जो प्रज्ञा जिसको हम विजडम कहते हैं या सत्य, इसकी खोज को हमेशा एक हाईएस्ट ह्यूमन गोल की तरह लिया गया है। और ऐसा नहीं है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, हमारे जो लिटरेचर है, आर्ट्स है या दूसरी जो टेक्नोलॉजीज जो यहाँ से उभर कर आई हैं, उसका इम्पैक्ट सिर्फ इस रीजन तक कन्फाइन रहा है। our Indian culture and philosophy, it has also influenced the civilizations across the world. और ये इतनी रिच लेगेसी है, इतने इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि इसको प्रिजर्व करना, इसको नर्चर करना। और कई बातें ऐसी भी रहती हैं कि जिसको आज के हम लिंगो या टर्मिनोलॉजी में कहें कि जब तक हम उसको वैलिडेट नहीं करेंगे, यानी अब वैलिडेट अगर करना है यानी कि हम उस पर अगर रिसर्च नहीं करेंगे, उसके जो फाइंडिंग्स अगर आते हैं जिसके थ्रू शायद हम उनको वैलिडेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजों को हमें अपने हायर एजुकेशन सिस्टम में इसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। एंशियंट इंडिया के अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हुए हैं और जिनका कंट्रीब्यूशन आप देखें बहुत रहा है। लेकिन आज के अगर हम करिकुलम या बुक्स अगर हम उठाएं, तो ये शायद हमको नाम नाम तो हमने सुने होंगे, है ना, कि अगर आप हमसे पूछा जाए कि कुछ नाम जरूर बहुत पॉपुलर हैं या कहें कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिटरेचर में या कहीं ना कहीं हमको सुनाई देता है या उनके बारे में हमको पता चलता है। लेकिन ऐसे बहुत से नाम हैं जिनके बारे में हमको ये नहीं पता कि, और हमारे स्टूडेंट्स को भी ये नहीं पता कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है। और चाहे वो नागार्जुना की बात हो, है ना, नागार्जुना नाम सबने सुना है। लाइक उनका कंट्रीब्यूशन आप देखें कि मेटलर्जी और केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, कि जो एक्सट्रैक्शन के मेथड्स हैं फॉर दी गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, कॉपर है। और आज भी जो उनके जो एल्केमी से लेकर जो कॉन्सेप्ट थे वो यूज करते हुए जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो उनकी गोल्ड की प्लेटिंग है, वो उन्हीं प्रिंसिपल्स को लेकर की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, चाहे आचार्य कनाद हो, चाहे आपके चाणक्य हो, वराहमिहिर हो, आपके नागार्जुना हो गए, आचार्य चरक हो गए, सुश्रुत हो गए। तो ऐसे बहुत सारे influential thinkers we can find who have contributed to the enrichment of the Indian knowledge systems. और ऐसा नहीं है कि कई बार ये भी क्रिटिसाइज या ये भी क्रिटिक्स कई बार ये बात करते हैं कि जब भी हम एंशियंट थिंकर्स या स्कॉलर्स की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट मेल्स, है ना, वुमेन स्कॉलर्स का वहीं पर कहीं पर जिक्र नहीं आता। बट देर आर मेनी contributions which can be contributed टू द विमेन स्कॉलर्स। जैसे आप देखेंगे कि ऋग वेदा के बहुत सारे ऐसे हिम्स हैं या श्लोक्स हैं विच वेर कंपाइल्ड बाय ऋषि के द्वारा की गए, लेकिन 17 ऋषिकाज यानी कि जो फीमेल ऋषिज थे उनका भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे रोमासा है, लोपामुद्रा है, अपाता, काद्रू, विश्ववर वावरा, घोष, जुहू, वागाम्भरिणी, पौलमी, जरिता, श्रद्धा, कामायनी, उर्वशी, यमी, इंद्रानी, सावित्री, देवयानी। तो इतने सारे स्कॉलर्स ऐसे रहे हैं जिनका की इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है। तो जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जब ये बात करते हैं कि जब नॉलेज ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो नॉलेज ऑफ इंडिया में वो सारा नॉलेज जो कि एंशियंट इंडिया का तो रहा, लेकिन इट हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द
मॉडर्न इंडिया कोई ऐसी एंशियंट चीजें नहीं है, और उसको किस तरह से हम आज के एजुकेशन में, आज के हेल्थ सिस्टम में, और आज के एनवायरनमेंट के जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स आ रहे हैं, उसको हम कैसे एनरिच कर सकते हैं, ये इसमें इनकलकेट करने की बात की गई है। साथ ही साथ ये भी, जब हम एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस की बात करते हैं, तो ऐसे बहुत से नॉलेज सिस्टम्स हैं जो कि ट्राइबल्स हो गए या जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज हो गई, उनके पास भी ऐसा बहुत सारा ज्ञान है। और क्योंकि वो ये वाली ऐसी कम्युनिटीज रही हैं जो कि शायद रिमोट एरियाज में रहे, वो शहरों तक नहीं आए, या वो मुख्य धारा में नहीं आए, तो ऐसी कई चीजें हैं जो उनके सिर्फ उस लोकेलिटीज में, या उनके जो स्पेसिफिक इनहेबिटेंट्स की जो एरिया है, वहीं तक कन्फाइंड है। तो ऐसा भी वहां पर बहुत नॉलेज है जो कि कहीं ना कहीं हम अपने करिकुलम में जिसको इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी की बात हो, चाहे योगा है, आर्किटेक्चर है, मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, लिंग्विस्टिक्स की बात है, और इसके साथ साथ किस तरह से जो गवर्नमेंट पॉलिटी है, कंजर्वेशन है, इस सब में इसका इम्पोर्टेंट रोल किया जा सकता है। तो एनईपी में ये बहुत स्ट्रेस देके कहा गया है कि we have to design some specific courses which are specifically dealing with the tribal ethno-medicinal practices. फॉर इंस्टेंस, जैसे हम यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं, तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो कि लोकल हीलर्स हैं, जिनके पास दे हैव अ वेरी रिच नॉलेज ऑफ द वेरियस प्लांट्स, उनकी एक्टिविटीज, और उनको किस तरह से यूज करना है। लेकिन वो कई बार वो बहुत चीजों को शेयर नहीं करते, और अगर वो जनरेशन टू जनरेशन ही वो उन चीजों को पास ऑन करते हैं, या हम किस तरह से अपने जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, एनवायरनमेंट को हमको कैसे, आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके रूट में हम देखें तो ये जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं, दे आर फॉलोइंग मेनी प्रैक्टिसेस which are conserving the environment, which are adopting natural farming without using of chemical fertilizers. तो ऐसे भी कुछ हम स्पेसिफिक कोर्सेज हमको डिजाइन करने की जरूरत है, which is enriched by the tribal प्रैक्टिसेस और ट्राइबल नॉलेज। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि जो भी हम करिकुलम डिजाइन करें, जो भी हम पेडागोजी हम यूज करते हैं, दैट मस्ट बी स्ट्रांगली रूटेड इन दी that must be strongly rooted in the Indian and the local context and ethos in terms of culture, traditions, heritage, customs, language, philosophy, geography, ancient and contemporary knowledge, societal and scientific needs, and indigenous and traditional ways of learning. और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमारे पास अब स्टूडेंट्स हर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की डाइवर्सिटी बढ़ रही है, ऐसे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, तो जब वो देखते हैं कि उनके आसपास की चीजें भी करिकुलम में इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो ज्यादा रिलेटेबल रहेगा, उनके लिए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, और ऐसे स्टूडेंट्स का नॉलेज एनरिचमेंट में भी उनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकेगा। नाउ अगेन मैं एक और फिर से आपके सामने एक कोट करना चाहूंगी कि व्हाट मार्क ट्वेन हैज ऑब्जर्व्ड, कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ लेजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन। Our most valuable and most constructive materials in the history of man are treasured up in India only. Now जब हम बात करते हैं what is Indian knowledge system, so I would like to know from the participants, what do you think is Indian knowledge systems basically? Yes, you can please unmute and share.
Yes, anyone, please? Hello, ma'am. Hi, yes, please. Yes, yes, ma'am. I guess is the system in which the traditional Indian knowledge from Vedas, even Upanishads, as well as from the Indian tribes, has been carried forward to the humans. Okay, okay. Anyone would like to add something to this? Hello. Good afternoon. Good afternoon. Good Yes, afternoon. one or two. Yes. Yes, please. Am I Yes, audible? Yes, Dr. Diwali. Yeah. Am I audible, madam? Yes, you are. Okay. Indian knowledge system is basically depends on different perspectives. First of all, if we consider the philosophical perspective, that is the most important point. If we consider the Rig Veda as ancient content, that will be the most important constituent. Then we can talk about the epistemological point, means Gyan Tattva. And another more important point, the metaphysical part. These all are the part of the Indian knowledge system. If we consider the blending of all sort of the things, as well as the mathematical base and different parts of the base, these all are instituted in the Indian knowledge system. And if we consider the heritage education, that also started for the Indian knowledge system. Yeah, okay. Yeah, thank you. Anyone else would like to add something to it? And one more thing, madam, I just want to add on this point. I'm sorry to disturb you. So that you have asked about the different women in saint like that, or women scholar. So most favorable one is the Lilavati mathematicians. She was very Yes, famous for the as a yes, Indian scholar. yes. Yes, yeah. Thank you. Thank you for that input. So when we are talking about Indian knowledge system, we and since this term is nowadays we are hearing everywhere, especially in all the academic forums. Uh, but I would just like, because all of us have different uh, perspectives, different ideas, like what is basically Indian knowledge system. But this is just what the limited understanding maybe we all are having, because we you all have heard this very uh, popular story about the blind man and the elephant. कि there were few blind men और उनको एक हाथी को पहचानने को बोला गया. अब क्योंकि ये सब जन्म से ही उन्होंने देखा नहीं था, तो उन्होंने हाथी जैसा कोई किसी चीज को कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं है. सो उन जब उनसे आइडेंटिफाई करने को कहा गया, तो हर कोई जब छू के देखता है, और क्योंकि हाथी इतना बड़ा है, तो वो जस्ट जो उनके हाथ में जो स्ट्रक्चर आ रहा है, जो पार्ट्स आ रहा है, उसके हिसाब से वो उसका परसेप्शन बना रहे हैं कि ये क्या है. जैसे जिसके हाथ में पूंछ आई, उसने उसको लगा ये तो झाड़ू है. जिसने उसके बॉडी को छुआ, वो बोले ये तो एक दीवार है. जिसके हाथ में उसके पाँव पे उसका हाथ आया, तो उन्होंने कहा कि ये कोई खंबे जैसा है या पिलर है. जिसके कान को छुआ, तो दे सेड कि दिस इज एक कोई सूपा है ना. तो इसी तरह से इंडियन नॉलेज सिस्टम भी एक बहुत ही व्यापक एक एरिया है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग शायद हम नहीं पूरा हम समझ नहीं पाएंगे. लेकिन हाँ, हर डिसिप्लिन में अगर हम देखें, कहीं ना कहीं उसमें हमको इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के कुछ अंश हमको जरूर हमको दिखाई देते हैं. तो अगर हम जस्ट समझना चाहें कि व्हाट इज दिस इंडियन नॉलेज सिस्टम्स बेसिकली, तो ये तीन वर्ड से बना हुआ है, दैट इज इंडियन नॉलेज एंड सिस्टम्स, राइट. तो जब हम इंडियन की बात करते हैं, तो इंडिया का मतलब जो आज की हमारी बाउंड्री है, कंट्री की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, वो नहीं है, है ना. इट इज रादर अ कल्चरल लेबल, कि जो हमारे अनडिवाइडेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, जो अखंड भारत था, जहां पर आप कह सकते हैं कि पूरा बर्मा से लेकर अफगानिस्तान, और यहाँ पर आप देखें कि कश्मीर से लेकर
यहाँ कन्याकुमारी तक का जो इतना व्यापक एरिया था, यहाँ का जो भी नॉलेज सिस्टम रहा है, ये हम इसको इंडियन की यहाँ पर ये डेफिनेशन है। दूसरा, जब हम बात करते हैं नॉलेज की, बात करते हैं नॉलेज, whenever we are talking about knowledge, it includes not only the formal knowledge that we are gaining or we are acquiring while we are studying in some academic institutions, but also the informal knowledge which is maybe passed down from generation to generation, फ्रॉम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, दादी, हम हमेशा दादी माँ के नुस्खों की बात करते हैं। कुछ अगर आपको कुछ आपको पेट दर्द हो रहा है या कुछ आपको चोट लग गई है तो आपको क्या करना है ना। सो दीज ऑल हैज बीन पास्ड ऑन थ्रू इनफॉर्मली। इसके अलावा बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारा नॉलेज ऐसा भी है जो कि ओरली ट्रांसमिट हुआ है, एंड फॉर मेनी देर आर ऑल्सो रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑल्सो। एंड व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या है कि ये कोई हैफर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, बट दिस इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड, इट इज इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। बहुत स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है, उसको बहुत मेथोडोलॉजिकली उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, उसको बहुत सिस्टमैटिकली उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक उसको ट्रांसमिट किया गया है, उसको प्रिजर्व किया गया है। तो बेसिकली हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को अगर हम समझें तो, जो कि ज्योग्राफिकल लेवल अनडिवाइडेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, और ऐसा भी जो कि कई ऐसे भी जनरेशन ऐसे भी हुए कि जो दूसरे लैंड से आए लेकिन वो यहीं के हो गए, यहीं यहाँ आकर बस गए। तो वो जहां से आए वहां से वो अपने ट्रेडिशंस, अपने प्रैक्टिसेस लाए, और वो फुल्ली यहाँ पर इंटीग्रेट हो गए। जो यहाँ का नेटिव कल्चर था, प्रैक्टिसेस था, उसमें इंटीग्रेट होकर भी जो एक एक नया कल्चर इमर्ज होके आया, वो भी इंडियन की डेफिनेशन में यहाँ पर आता है। तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ट्रैवलर्स उस टाइम पर आए और उनके भी आपको ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं। तो उनके भी उन्होंने जो इंडियन लिटरेचर था उसका ट्रांसलेशन किया, है ना। तो लेकिन वो जो ट्रांसलेशन था वो आईकेएस नहीं होगा, दैट विल बी अबाउट दी आईकेएस। एंड सिमिलरली जब हम बात करते हैं नॉलेज की, तो नॉलेज यानी कि ये नॉलेज जो है, ये बहुत डीप एक्सपीरियंसेस से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, एनालिसिस से, और उसको वैलिडेट करके वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव होता गया। क्योंकि नॉलेज, वी ऑल नो, इट इज नॉट समथिंग, इट इज वेरी स्टैटिक, इट इज अ डायनामिक थिंग, है ना। दैट इज हैज बीन अ continuous refinement of this, and what we today have is that refined knowledge। और ये जैसे बताया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हर तरीके से है, और एक बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको फॉलो किया गया। तो अगर जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की बात करते हैं, तो दीज आर दोज नॉलेज ट्रेडिशंस which have their genesis in cultural India, and या तो वो इंडियन यहाँ पे जनरेट हुए, या फिर यहाँ पर उनको मेथोडोलॉजिकली उनको प्रिजर्व किया गया बाय द पीपल हु वर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। लेकिन आईकेएस को लेकर बहुत सारे कुछ कुछ मिसकंसेप्शंस हमारे दिमाग में रहते हैं, एंड वी हैव सर्टेन बायसेस ऑल्सो। सो यू कैन सी दैट कि जब हम कहते हैं कि आईकेएस जो है कोई डिसिप्लिन, सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग नोशन। एक्चुअली आईकेएस क्या है? इट इज अ लेबल विच इज गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ डिसिप्लिन्स विच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर टू वेरिंग डिग्रीज। यानी आईकेएस कोई सब्जेक्ट नहीं है। जब आप हमसे कहा जाता, हमसे अभी जब आप एनईपी इम्प्लीमेंट हुआ है, तो जब हम आपसे कहा गया होगा कि आपको अपने करिकुलम में आईकेएस को इंक्लूड करना है। तो आईकेएस में अगर इंक्लूड अपने करिकुलम में करना है, तो जो केमिस्ट्री वाला होगा वो क्या करेगा? जो आईकेएस विच इज रेलेवेंट टू द केमिस्ट्री, दैट हैज टू बी इंक्लूडेड। अगर कोई बायोलॉजिकल साइंसेस वाला है, तो
या जैसे मान लीजिए कोई अगर फार्मेसी वाले हैं, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि द आयुर्वेदा है ना, दैट इज द व्हाट आईकेएस इज रेलेवेंट टू आवर सब्जेक्ट। अगर मैथ्स में है तो आपका जो वैदिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। सो इन दिस वे यू विल सी दैट आईकेएस एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना होके एक इट इज अ लेबल विच इज गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ डिसिप्लिन। सिमिलरली अनदर मिसकंसेप्शन या एक जो हमारे मन में एक भ्रांति है कि आईकेएस सिर्फ संस्कृत, अगर जो आईकेएस है सिर्फ संस्कृत में होता है, या जो संस्कृत जानने वाले लोग हैं वही आईकेएस का में उन्हीं का सिर्फ कंट्रीब्यूशन है। दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग नोशन, बिकॉज संस्कृत तो सिर्फ एक भाषा है, और आईकेएस अगर आप देखेंगे आगे उसको मैं बताऊंगी भी कि आपको किस तरह से इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन virtually all the Indian languages. Similarly, another misconception we have is that IKS is ancient, but the correct way to take it is that IKS includes all the knowledge traditions of India, whether it is the past or the present. और क्योंकि नॉलेज जो है हर डे क्रिएट होता है, और जो नॉलेज हमेशा जो क्रिएट होता है दैट इज बेस्ड ऑन द वर्क दैट हैज बीन डन बाय द पीपल बिफोर अस। तो ये कंटिन्यूअसली एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, तो आईकेएस को कहना कि ये सिर्फ एंशियंट नॉलेज ट्रेडिशंस है, ये भी गलत होगा। सिमिलरली कई बार ये भी एक आता है एक रिलीजियस या उसको एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक वो देखा जाता है कि एक नैरेटिव कई बार बनता है कि आईकेएस जो है दैट इज ओनली रिटन बाय हिंदूज। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी आर एक्चुअली मीनिंग बाय हिंदूज, बिकॉज जो हिंदू टर्म आया दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल हु वेर इनहैबिटिंग बियॉन्ड द सिंध रिवर, राइट। तो लेकिन अगर हम देखें कि हाँ बहुत सा जो आईकेएस है वो हमको हिंदू से रिलेटेड जो लिटरेचर है उसमें जरूर मिलेगा, बट जैन्स हैं, बुद्ध हैं, सिख्स हैं, मुस्लिम्स हैं, दे हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। कई बार ये भी बात आती है कि आईकेएस इज मेनली स्पिरिचुअलिज्म, सो दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट थॉट, क्योंकि आईकेएस जो है इट इंक्लूड्स द एम्पेरिकल साइंसेस ऑल्सो। आप अगर देखें लिंग्विस्टिक्स की बात देखें, या फिर एस्ट्रोनॉमी का देखें, आप देखें कि आज भी जो पांचांग बनते हैं वो पूरा प्रेडिक्ट करते हैं कि सन का मूवमेंट कैसा होगा, मून का मूवमेंट कब होगा, सोलर इक्लिप्स कब आने वाले हैं, लूनर इक्लिप्स कब आने वाले, दैट प्रेडिक्शन इज ऑल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी। चाहे हेल्थ साइंसेस की बात हो, मैथमेटिक्स हो, मेटलर्जी हो, ऐसे बहुत सारे साइंसेस हैं जहां पर आईकेएस की हमको एक अमिट छाप जो है वो दिखाई देती है। सिमिलरली ये भी कई बार जो ओवर एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स हैं इसके, वो कई बार ऐसा भी कहते हैं कि आईकेएस हैज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अवर लाइफ, क्योंकि हमारे जो एंशियंट टीचर्स थे उन्होंने सारी समस्याओं का जवाब दे दिया है। सो दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग नोशन, क्योंकि हमारे जो इंटेलेक्चुअल एंसेस्टर्स थे उन्होंने उस समय पर जो समस्याएं थी उसके सॉल्यूशंस देने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर्स थे, है ना। अगर हम बोलें कि क्वांटम फिजिक्स जो है वो एंशियंट है तो ये भी एक रॉन्ग नोशन होगा, है ना। सो इन दिस वे this over enthusiasm is also harmful, and it also creates a negative image about this. Then as have already given you the examples कि कई बार कई लोगों को ये लगता है कि IKS जो है that is only written by men, but that is not the case. There are many Indian texts which has been written by the women scholars as well. सिमिलरली कई बार उसका ये भी क्रिटिसिज्म आता है कि आईकेएस जो है इट इज मेनली ड्रिवन बाय द ब्लाइंड बिलीव्स एंड डॉगमास व्हिच आर रूटेड इन द रिलीजियस context. So but there may be some instances, but अगर हम डीपली अगर हम एनालाइज करने जाएं तो यू विल फाइंड दैट हमारे जो सिस्टम रहा है, एंशियंट जो प्रैक्टिसेस रही हैं
उसमें एक बहुत ही हेल्दी ट्रेडिशन रहा है ऑफ वाद विवाद का, दैट इज आर्गुइंग एंड काउंटर आर्गुइंग इन अ वेरी हाईली प्रोफेशनल, रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। यानी कि कोई भी चीज को सिर्फ ब्लाइंडली कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, उसके ऊपर वाद विवाद या चर्चा के बाद ही उस नतीजे पे या उस कंक्लूजन पर पहुंचा जाता था। और कई बार जैसे इसके जो क्रिटिक्स हैं, कई बार ये भी कहते हैं कि इट इज इररेलेवेंट एंड इट इज यूजलेस। बट इट डिपेंड्स कि हम यूज से हमारा क्या मतलब है। कि हाँ, हो सकता है कि आज के समय पर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स और इवॉल्व हुए हैं, हमारे पास और साइंटिफिक टूल्स हमारे बेटर हुए हैं, लेकिन जो एटीट्यूड है, जो मेथोडोलॉजी है, वो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी रेलेवेंट है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई कर कर हमको रिसर्च करनी होगी। वी विल हैव टू स्टडी कि हाउ रेलेवेंट इट इज एंड वी हैव टू वैलिडेट इट। अगर अगर हम उसका वैलिडेशन करते हैं तभी उसका हम प्रेजेंट टाइम्स में रेलेवेंस देख पाएंगे, है ना। कोई भी चीज हम ब्लाइंडली उसको अगर फॉलो करने रहेंगे तो वो ज्यादा दिन तक वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो एक निश्चय ही मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि व्हाई देर इज सो मच एम्फोसिस इज नाउ प्लेस्ड ऑन IKS in higher education, because it is important, because we need to have a pride in our cultural heritage. Needless to say, आप सभी हम सभी को पता है जो आपकी टर्मरिक का था या नीम का जो पेटेंट का जो इश्यू अराइज हुआ, कि जो हमारा ट्रेडिशनल हमारा नॉलेज था, हमने कभी उसको IPR या उसकी उसकी पेटेंटिंग की बात हमने कभी नहीं सोची। बट द पीपल वेंट ऑन एंड अप्लाइड फॉर पेटेंट फॉर से टर्मरिक एंड बिकॉज, बट उसको फिर काउंटर किया गया कि किस तरह से इट हैज बीन यूज्ड इन since ancient times and the references were there in the ancient Ayurvedic texts also. तो कहीं ना कहीं हमको अपने कल्चरल हेरिटेज में एक प्राइड हमको चाहिए। हम दैट उस प्राइड को आइडेंटिफाई करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट, एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन सॉल्विंग द मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स। अब आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं या जो एनवायरमेंटल पोल्यूशंस की बात करते हैं, डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, तो अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो वी विल सी दैट कि हाउ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के किस तरह से डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते थे, किस तरह से जो टीचिंग लर्निंग जो हमारे एंशियंट गुरुकुल सिस्टम्स थे। अगर आज हम कंपेयर करके देखें जो हमारी आज की जो एजुकेशनल फिलोसफीज हैं, या वहां पर हम देखें तो हमको कई इनोवेटिव टीचिंग पेडागोजीज या मेथोडोलॉजीज भी हमको वहां से मिल सकती है। साथ ही साथ एक जब हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, हाँ, आप सभी ने हम सभी ने पंचतंत्र की कथाएं हैं या हितोपदेश है, सबने पढ़ा होगा कि किस तरह से हर एक स्टोरी के बाद एक वहां पर एक लेसन रहता था। तो वी कैन ऑल्सो यूज दीज स्टोरीज फॉर inculcating values in our students also. Similarly, it is also a means by which we can connect to the local culture, कि जो हमारे आसपास की कम्युनिटीज हैं उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके जो रेलेवेंट प्रैक्टिसेस हैं, जो आज भी स्टिल यूजफुल हैं या उसकी यूटिलिटी है, उनको अगर हम स्टडी करें, उनको वैलिडेट करें, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास जो ऐसे स्टूडेंट्स ऐसी कम्युनिटीज से आ रहे हैं, ऐसे रीजन से आ रहे हैं, उनका जो कनेक्ट है वो हायर एजुकेशन के साथ ज्यादा बन पाएगा। देर आर ऑल्सो न्यूरो साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑल्सो। योगा है, मेडिटेशन है, हाउ दीज योगा योगिक पोजिशंस है, प्राणायाम है, किस तरह से एक न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट्स देता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। और अगर हम थोड़ा सा क्लोजली एग्जामिन करें कि ऐसे बहुत सारे कारण रहे हैं जिसके कारण ये जो इंडिजिनियस नॉलेज है ये कहीं ना कहीं इरोड हो गया या लॉस हो गया।
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि अनअवेयरनेस की, वी ourselves आर अनअवेयर अबाउट द ट्रेजर ऑफ नॉलेज दैट वी आर हैविंग विद, है ना, क्योंकि जब तक हम खुद रियलाइज नहीं करेंगे, हम उसको खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उसका लॉस होता जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा कि जो पॉपुलेशंस का माइग्रेशन हुआ from the villages to the small towns, and from the small towns to the metros, and from the metros to the foreign countries, foreign lands. So कहीं ना कहीं इस माइग्रेशन में क्या हुआ, जो उनकी ऐसे ऐसे नॉलेज सिस्टम्स थे, ऐसे जो प्रैक्टिसेस थे, ऐसे जो रिच इंफॉर्मेशन थी, वो कहीं ना कहीं उसका लॉस होता गया। और ये भी जरूर बात आती है, जेंडर इनइक्वालिटी की भी बात आती है कई बार। कई इंस्टेंसेस में हम पढ़ते हैं ऐसा, समझ पाते हैं कि कई जो से स्पेशली ओरल ट्रेडिशंस होते थे विच वेर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ओनली थ्रू ओरल ट्रेडिशंस, की वेयर द फादर यूज टू पास इट ऑन टू द सन ओनली। तो अगर उनके सन नहीं हुए तो कहीं ना कहीं फिर उन्होंने वो चीजें क्या हो गई, उन्होंने आगे जनरेशन्स में पास ऑन नहीं करी और उसका वहीं पर आ, अंत हो गया, राइट। एंड ऑल्सो मॉडर्नाइजेशन के साथ हमारी लाइफस्टाइल्स चेंज हो रही हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, हम न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना बुरा नहीं है, बट उसके बहुत सारे कई जो रिपरकशंस आ रहे हैं, जिसके कारण हम अपनी पुरानी चीजों से कटते जा रहे हैं, राइट। एंड ऑल्सो जब हम बात करते हैं कि ऐसे आईकेएस के ऊपर हमको अगर रिसर्च करना है, उनको वैलिडेट करना है, तो ऐसे रिसर्च के लिए हमको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कई बार लिमिटेड मिलता है। और कहीं ना कहीं आप देखें कि जनरेशन गैप तो हमेशा ऐसा ही रहा है ना, देर विल ऑलवेज बी अ जनरेशन गैप बिटवीन one generation and the another. But this gap, you can say it has further, you can say, uh, एक कनेक्ट जो था वो जो यंगर जनरेशन है वो पुरानी चीजों से वो कनेक्ट नहीं कर पाते, तो उस कारण से भी दे लीव दोज प्रैक्टिसेस बिहाइंड एंड दे अडॉप्ट द न्यूअर टेक्नोलॉजीज और द न्यूअर वे ऑफ थिंग्स। और कई बार कई ऐसे भी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे भी ट्रेडिशंस हैं जिनका कि कोई हमारे पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में वो नहीं रहे, और जिसके कारण भी उनका लॉस होता गया। तो अगर आप देखें कि जो आईकेएस को क्लासिफाई किया गया, वो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं उसके क्लासिफिकेशन के। एक जो क्लासिफिकेशन जो कि अर्थशास्त्र में दिया गया है, दैट इज दी, अर्थशास्त्र में कहा गया है कि अनविकसिकी त्रायी वार्ता दंड नीतिश्च इति विद्या, यानी कि जो फोर साइंसेस, जो मेजर फोर साइंसेस हैं, वो क्या क्या है, दैट इज वन इज द अनुविकसिकी, दैट इज साइंस ऑफ इंक्वायरी, त्रयी यानी वेदा, वार्ता यानी कि जो कॉमर्स एंड ट्रेड, और दंड नीति यानी कि गवर्नेंस। सो दीज वेर बेसिकली आइडेंटिफाइड एज द फोर बेसिक साइंसेस। एक और जो फ्रेमवर्क है दैट इज द चतुर्दशा विद्यास्थाना, चतुर्दशा यानी कि 14 ट्रेडिशनल डिसिप्लिन। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या क्या है 14 ट्रेडिशनल डिसिप्लिन, तो है पुराना, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, वेदांगास, 6 वेदांगास, देन 4 वेद। तो ये जो 14 हैं, दे वेर कंसिडर्ड एज द रूट्स ऑफ नॉलेज एंड धर्मा। इसके बाद इनमें 4 और ऐड किए गए, दैट इज द आयुर्वेदा, गंधर्व वेदा, अर्थशास्त्र और धनुर्वेदा। और इसके साथ ये अष्टदशा विद्यास्थाना की बात आई। तो ये चतुर्दशा विद्यास्थाना जो है, इसमें 4 जो वेदा थे, ये वेद से ये बेसिकली दे वर दी श्रुति परंपरा से पास ऑन हुए थे। एंड इसमें थे आपके ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। और इसके बाद जो 6 वेदांगास हैं, दैट इज द शिक्षा, व्याकरणा, छंदा, निरुक्ता, कल्पा और ज्योतिषा। इसके बाद जो न्याय है, दैट इज द लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी, देन मीमांसा, दैट इज द हर्मेन्यूटिक्स, देन धर्मशास्त्र यानी कि जो
सोशल और लीगल कोड्स थे, और पुरानास दैट इज द क्रिएशन एंड द डिसोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड क्रोनोलॉजी ऑफ द डिफरेंट मनूज एंड डायनेस्टीज, एंड दिस इंक्लूड्स द रामायणा एंड द महाभारता। और जो एक और जो क्लासिफिकेशन दिया गया दैट इज अकॉर्डिंग टू द शिल्प्स, है ना, दैट इज द कि जो किस शिल्प के आधार पर ये क्लासिफिकेशन किए गए। तो ये जो 18 शिल्प को आइडेंटिफाई किया गया दैट इज द, ये 18 शिल्प आप देख सकते हैं, दैट इज वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग, देन मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, देन इंजीनियरिंग, देन देर इज द स्कल्पचर, एग्रीकल्चर, then cattle breeding, commerce, medicine, law, administrative training, then archery and military art, magic, एंड तो ये 18 जो है शिल्प है, दीज आर द 18 शिल्प्स। तो इसी तरह से 64 कलाओं की भी बात की जाती है, दैट इज, ये कहा जाता था कि एनी इंडिविजुअल इफ दे हैव टू बी a complete individual, they should be they should be able to perform these 64 different कलास, है ना। तो 64 यानी वो 64 से आया। और एक इंडिविजुअल अगर कंप्लीटली, एक जो हम बोलते हैं ना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल का अगर हम चाहते हैं, तो ये दे हैव टू बी कन्वर्सेंट विद दीज 64 डिफरेंट कलास। तो इस फॉर्म में अगर देखें तो आप ये डिफरेंट, दीज आर द 64 डिफरेंट कलास आप देख सकते हैं कि इसमें हर तरह के आर्ट्स की बात की गई है, वेदर इट इज नॉट ओनली द परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ से लाइक सिंगिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन इवन द, जैसे आपका वीविंग हो गया, देन योर सिंपल आपका आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स है, हर्ब्स हैं। सो इस तरह से ये 64 डिफरेंट कलास की बात होती है। नाउ कमिंग टू दी कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ आईकेएस। तो आईकेएस के जो सोर्सेज हैं इसको हम दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज द, वन इज द लिटरेरी सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज द नॉन लिटरेरी सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज और नॉन लिटरेरी सोर्सेज की बात है, तो लिटरेरी सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो लिटरेरी सोर्सेज नो डाउट जो मेजर जो लिटरेचर हमको अवेलेबल है दैट इज अवेलेबल इन संस्कृत, है ना। और संस्कृत के अलावा नॉन संस्कृत लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे हमारे पास लिटरेचर सोर्सेस अवेलेबल हैं, जिसमें बौद्ध लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, रीजनल लैंग्वेज के बहुत सारे सोर्सेज हैं, एंड ऑल्सो अरबिक और पर्शियन सोर्सेज भी अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ टेस्टिमोनियल्स या सेकेंडरी सोर्सेज हैं, यानी कि जो पुराने समय में जो बहुत सारे जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे वो हैव विजिटेड दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, उन्होंने यहाँ पर आए, जो उनके टेस्टिमोनियल्स हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, वो भी एक तरह से लिटरेरी सोर्सेज का काम करते हैं। इसके बाद आता है दी नॉन लिटरेरी सोर्सेस। नॉन लिटरेरी सोर्सेस में आ जाता है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, देन दी लिविंग प्रैक्टिसेस। तो अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की हम बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ जाते हैं जो डिफरेंट आपके स्कल्पचर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कि हमको एक डायरेक्ट हमको एक इंडिकेशन देते हैं कि व्हाट आर द, ठीक। सो इस तरह से आपका एक हमको इंडिकेशन मिलता है कि उस टाइम पर क्या एक्सपी क्या आपके अ, अ, किस तरह से चीजों को एक्सप्रेस किया जाता था, क्या मटेरियल उस टाइम यूज होते थे, है ना, दैट दैट इंडिकेशंस आर गिवन। इसी तरह से जब एक्सकवेटेड साइट्स पे जाते हैं वहां पर भी जो हमको बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स मिलते हैं, बहुत से कुछ ऐसे औजार मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे कई बार यूटेंसिल्स मिलते हैं जिनसे हमको एक एविडेंस मिलता है कि उस समय पर क्या चीजें क्या फॉलो की जाती थी।
Then there is also the literary and the historical sources, and also the inscriptions and the epigraphs, यानी कि जो डायरेक्ट जो टेक्स्ट जो पत्थरों पे शिलालेख हम जब कहते हैं, so that gives us direct, you can say, textual insights into the various historical events. So on your screen, you can see a number of archaeological sources. So can you identify these on the extreme left? Yes, please. I hope I'm audible. Yes, please. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, can you identify this structure on the extreme left of your screen? Yes, anyone? So this is the famous temples of Hampi, जो कि कर्नाटका में है. और इसकी खास बात क्या है? I hope my voice is reaching out to you. मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप लोगों तक? Yes, ma'am. Yes, okay. तो आप देखेंगे कि दीज आर द टेम्पल्स ऑफ हम्पी. और ये जो टेम्पल्स हैं, इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पे जो पिलर्स हैं, ये म्यूजिकल पिलर्स हैं कि अगर आप इनको हिट करते हैं तो आपको जो सरगम जो कहते हैं ना, वो आपको सुनाई देता है, म्यूजिकल वो. सो इट इज जस्ट अ वंडर कि क्या टेक्निक्स उन्होंने यूज करी, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी साउंड के बारे में, एकूस्टिक्स के बारे में, उसको उस तरह से डिजाइन करने में कि we are able to get music by hitting those pillars, right? Now, what is this structure in the middle? Yes, this is the Nalanda University. These are the remains of the Nalanda University, which was considered as one of the largest universities in the world at that time, जहां पर करीब बोलते हैं 8,000 स्टूडेंट्स रहते थे और 2,000 गुरु या टीचर्स रहते थे, है ना. और इट वाज अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो वो रिमेन्स से भी हमको दिखता है कि वहां पर क्या से क्या क्या चीजें होती थी. लाइब्रेरी वाज सेड टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट. बहुत मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वहां पर, एंड कुछ इन्वेजन्स में उनको डिस्ट्रॉय हुआ. And this is a modern जो Nalanda University which has been established. And on the extreme right, this is the Takshashila University. Can anyone tell where is this? What is the location of Takshashila University? कहाँ पर है तक्षशिला? बिहार. तक्षशिला बिहार में है Yes, ma'am. कि पाकिस्तान में है? No, ma'am. Nalanda in Bihar and Takshila is Pakistan. Pakistan. हाँ, नालंदा है बिहार तरफ है. Pakistan. हाँ, तक्षशिला जो है that Takshila is in is the Pakistan. Pakistan, है ना. But it was the Pakistan. first finest and the oldest non Hmm. university in the world, है ना. तो ये
कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे हमको पता चलता है कि हमारा नॉलेज का कंट्रीब्यूशन हमारा कितना रहा था. सिमिलरली द मोहनजोदारो का जो रिमेन्स है, मोहनजोदारो के एक्सकेवेशन से भी बहुत सारी चीजें एविडेंट होती है कि क्या खास बात है, व्हाट हैज बीन द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ मोहनजोदारो. मोहनजोदारो क्या था? इट वॉज अ वेरी प्लान्ड सिटी, राइट, है ना. वहां का ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्रॉपर था. देर वॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड्स. और वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो दैट हैज बीन डन विथ द यूनिफॉर्म ब्रिक्स, है ना. यानी कि दे हैड सच यूनिट्स फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ सच ब्रिक्स, जिससे कि ये जो प्लान्ड सिटीज थे इनका कंस्ट्रक्शन किया गया. Similarly, these are the step wells which are you can find in the western region of the country, चाहे वो गुजरात हो या राजस्थान हो. इनमें से एक जो आप पिक्चर देख रहे हैं दैट इज अ रानी की बाव एट दी पाटन, गुजरात का जो स्टेप वेल्स है. तो ये जो स्टेप वेल्स हैं ये आप देखेंगे कि दिस इज नॉट ओनली आर्कियोलॉजिकली बहुत रिच है, बट इसके अलावा इट वॉज अ स्ट्रक्चर विच वॉज यूज फॉर द वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज किया जाता था. क्योंकि ये रीजन्स ऐसे थे कि जहां पर वाटर जो था वो स्केर्स था. तो जो रेन वाटर को प्रिजर्व करके किस तरह से ये स्ट्रक्चर्स क्रिएट गए, ये दिस इज ऑल्सो अ वेरी गिव्स अस द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. सिमिलरली ये पंचलोहा आइडल आपने सुना होगा, पंचलोहा की मूर्तियां. यानी कि ये जो एक मेटल Yes. अलॉय है ना. और ये जो अलॉय है Yeah. इसमें क्या क्या होता था? दैट इज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन एंड जिंक. या जिंक की जगह Zinc. आयरन भी यूज होता था. और ये जो आइडल्स हैं, ये जो आप सोच सकते हैं कि अलॉय की जो टेक्नोलॉजी थी ये उस टाइम पर भी अवेलेबल थी. क्योंकि ये जो आइडल्स बनाए जाते थे आप देखेंगे दे आर वेरी फाइन स्ट्रक्चर्स, उनमें बहुत फाइन डिजाइन्स हैं. तो इट इज अ वंडर कि हाउ दीज idols were created. So these idols were at that particular time that was made by using the lost wax casting method. बता सकते हैं क्या होता है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड? क्योंकि देखिए स्टोन के आइडल्स हो उनको तो आप स्कल्पचर करके बना सकते हैं, है ना. बट ये मेटल्स के कैसे आइडल्स बनाए जाते होंगे उस टाइम? No idea, ma'am. No idea. लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड आपने सुना होगा. लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड में क्या होता था कि जो मेटल स्टैचूज जो बनानी होती थी उसका पहले एक वैक्स का स्कल्पचर बनाया जाता था, है ना. वैक्स का स्कल्पचर बनाकर उसके चारों तरफ उनको उसको क्ले या जो मिट्टी है, मिट्टी लगा दिया जाता था पहले. वैक्स से जो भी आपको कलाकृति बनानी है उसका स्ट्रक्चर बना लिया वैक्स से, क्योंकि वैक्स को तो आप इजीली उसको आप मोल्ड करके शेप दे सकते हैं. फिर इस वैक्स के ऊपर देयर वो इट वाज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ क्ले, है ना. वेट क्ले उसमें लगाया जाता था. उसके बाद ये जो क्ले जो है, जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर वैक्स है, उसको फिर बेक किया जाता था. जब आप उसको बेक करते हैं तो क्या होगा? क्ले तो आपका हीट होके हार्ड होता जाएगा, लेकिन वैक्स क्या होगा? वो मेल्ट होकर निकल जाता था. नाउ जब बेक हो गया देन यू विल हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ क्ले विच इज नाउ हार्डेंड. नाउ इस हार्डेंड क्ले के स्ट्रक्चर में मेटल को मेल्ट कर कर उसमें अंदर Okay. पोर Okay. किया जाता है. एंड दिस मेटल, जब मेटल वॉज कूल्ड, यानी जब कूल हो गया यानी कि हार्ड हो गया, उसके बाद जो क्ले का केसिंग है उसको रिमूव कर दिया जाता था. दिस दिस इज नोन एज द दिस टेक्निक इज स्टिल इट इज यूज्ड, दैट इज द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड. एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो आपने सबने सुना होगा, देखा होगा, जस्ट एटलीस्ट देखी होगी. कैन यू आइडेंटिफाई दिस?
ये बहुत फेमस वो है। जब भी हड़प्पा मोहनजोदारो की बात होती है तो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये वाला। दिस इज द लॉस्ट वैक्स, वही कास्टिंग मेथड से बनाया गया था ऑफ द हड़प्पा कल्चर अराउंड 4000 years बैक, और जो कि है फिगर ऑफ द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो। एंड आई थिंक किसी का माइक ऑन है। एंड दिस एंड दिस वाज किसी का, तेजस तेजस शर्मा जी प्लीज स्विच ऑन। तेजस शर्मा जी प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। So this is the image of dancing girl of Mohenjo-daro, which was also prepared, manufactured with the lost wax technique, right? Then there are also many more archaeological structures. Whether you all might have heard about this iron pillar, which is located near Qutub Minar. Or what is the speciality of this iron pillar is this iron is a rustless. तेजस शर्मा जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या थैंक यू। तो आप देखेंगे कि ये जो आयरन पिलर है ये रस्ट नहीं हुआ है ना। सो दैट इज इट इज मेड अप ऑफ सर्टेन अलॉय। इवन दो इतने सालों से वो सेंचुरीज से वो एक्सपोज्ड है, सन है, मॉइस्चर है, बट स्टिल इट हैज रिमेन्ड रस्टलेस। और इस तरह के आयरन पिलर्स ना केवल हमको यहाँ बहरौली में यहाँ दिखाई देता है, विच इज लोकेटेड नियर कुतुब मीनार, बट इस तरह के स्ट्रक्चर्स दे आर ऑल्सो देयर इन मध्य प्रदेश, ऑल्सो माउंट आबू में भी है। और इवन जो भुवनेश्वर में और जो कोणार्क में, पुरी में जो है आपके, वहां पर भी आपको इस तरह के पिलर्स जो हैं दैट हैज बीन फाउंड। और आप देखेंगे दिस एरिया जो है उड़ीसा वाला है, दैट इज एट दी नियर दी सी, जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। और नॉर्मली आप देखेंगे कोई भी अगर आयरन का मटेरियल होगा तो दैट शुड हैव रेस्टेड, बट दिस पॉइंट्स आउट कि किस तरह से उस समय भी हमारे यहाँ की जो मेटल वर्किंग इंडस्ट्री दैट वाज वेरी वेल डेवलप्ड। देयर इज ऑल्सो वन वुड स्टील, एक वुड स्टील होता था जो कि विच वाज वन ऑफ द स्टील विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय अ मेथड विच वाज इंडिजिनियस टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द एंशियंट इंडिया। तो ये स्टील बनाने के लिए जो था, उसमें जो आयरन, पोरस आयरन को उसको हीट किया जाता था, हीट करके उसको हैमर करते 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 और उसको ब्रेक करके फिर उसको वुडन चिप्स के साथ उसको क्ले कंटेनर में उसको हीट किया जाता था। और ये जो कार्बन जो वुड में से आयरन उसको एब्सॉर्ब कर लेता था, और जो हमको स्टील मिलता था, ये ऐसे मेथड से जो स्टील मिलता था that had a uniform composition of 1 to 1.6% of carbon। और इस स्टील की एक हाथ बात थी वुड स्टील की, इट वॉज वेरी malleable, और इट वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग योर वेरियस जो आपके स्वॉर्ड्स हैं, डेमास्कस स्वॉर्ड्स आपने बहुत फेमस है। इवन जो टीपू सुल्तान की तलवार आप हम पढ़े हैं, सुने हैं, दे वर ऑल प्रिपेयर्ड विद दिस वुड स्टील। तो वुड स्टील की अगर हम जस्ट जब हम बात करते थे, यानी कि उस समय पर भी हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो आज हम देखते हैं कि वेयर वी आर एज द लीडर्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया, that if we go down and just look back, we will see that it is not something very new. We have always been, you can say, pioneers in this technology। और ये हमको कैसे पता चलता है, क्योंकि जब बहुत सारे ऐसे साइट्स पर कर्नाटका में हमको आयरन मिला है, ऐसे साइट से विच कैन बी डेटेड बैक टू 1100 BC। इवन जो किंग पोरस, जब अलेक्जेंडर हैज इन्वेडेड इंडिया एंड किंग पोरस was defeated, so he has gifted 30 pounds of Indian iron at that particular time. Similarly, even in Arthashastra, Kautilya or Chanakya, he has also mentioned the
art of extracting the metals. एंड ये जो आपका आयरन पिलर की बात जो बता रही थी मैं, दैट वाज बेसिकली erected at Dhar in Madhya Pradesh and later it was moved on to Delhi. एंड 12th century AD में आप देखेंगे कि आयरन एंड स्टील जो था दैट वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम मलाबार बाय दी जूइश मर्चेंट्स जो यहाँ पर आके मलाबार एरिया में सेटल हुए थे. दे वर एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील फ्रॉम द मलाबार रीजन. And these iron beams that were also used in the construction of Sun Temple, Konark in Orissa, in the 12th, 13th century AD. और इस तरह से बहुत सारे हमको एविडेंसेस प्रोग्रेसिवली मिलते हैं वेयर यू कैन सी दैट 1870 में बंगाल आयरन एंड वर्क्स वाज एस्टैब्लिश्ड एट कुल्टी. देन 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज फॉर्म्ड. Howrah Bridge that was manufactured with around 80,000 tons of steel in 1914. तो इस तरह से आप देखें जो स्टील प्लांट्स बिल्ड अप हुए. So all this has, it is one evidence about how uh, the knowledge systems that we have leveraged on that, and we have a very flourishing iron and steel companies in or industry in India. Similarly, there is also one very important technology which was very peculiar to this side. क्योंकि जो जिंक का डिस्टिलेशन है, जिंक का जो डिस्टिलेशन था बहुत थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है. क्योंकि जिंक के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है कि जिंक जो है इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अराउंड 410 डिग्री सेंटीग्रेड और 930 डिग्री पे वो इवेपोरेट हो जाता है. लेकिन आयरन जो है इट इज वेरी रिएक्टिव और अराउंड 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है कि आयरन रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड. तो इसके लिए क्या जरूरी था कि जिंक अगर इस टेम्परेचर से ऊपर जाएगा तो वो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और आप जिंक को आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स कि बिलो 550 डिग्री सेंटीग्रेड यू विल हैव टू कंडेंस द जिंक वेपर्स. सो एंशियंट इंडियन they have developed this यंत्र कह सकते हैं या this टेक्निक जो कि was based on the downward drift distillation process. इसमें क्या होता था कि दो जो पॉट्स थे, अर्दन पॉट्स जो थे, they were placed one over the other. जो अपर पॉट रहता था it contains a solid ore और इसको सील कर दिया जाता था लोअर पॉट के साथ. तो लोअर पॉट सर्व्ड एज द कंडेंसर और ऊपर से इसको यहां से हीट किया जाता था. और ये जो सील करने के लिए यहाँ पे क्ले से इसको सील कर दिया जाता था. और बीच में आप देखेंगे एक रीड की स्टिक लगाई जाती थी कि अगर जो वेपर्स हैं गैसेस को एस्केप करने के लिए, नहीं तो प्रेशर वहां पर बिल्डअप हो जाएगा. तो जैसे जैसे ही यहाँ से जो जिंक है हीट होने पे मेल्ट होता था, so there is no other way for it to escape. So as it enters into this other pot, यहाँ पर आकर ये condense हो जाता था. So this technique, this was, you can say the India was the first and the only civilization to produce zinc by distillation process. Now ये हम it is not just one exaggeration because आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे smelting furnaces के remains जो हैं they have been found in many areas, especially जो राजस्थान का जावर माइंस है, यहाँ पे हमको प्रूफ्स मिले हैं कि जो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट जिंक स्मेल्टिंग के विच कैन बी डेटेड बैक टू मोर देन 2000 years, राइट. और एक जो फर्नेस होता था उसमें एक फर्नेस में आप देखेंगे कि वन एंशिएंट हैड 36 उसमें रिटॉर्ट्स होते थे और उसमें हम 10 से 15 केजी जिंक को प्रोड्यूस किया जा सकता था. तो ऐसे यहाँ पर करीब करीब आप देखेंगे कि 130,000 tons of residues have been found of these retorts. तो जिससे ये इंडिकेशन आप लगा सकते हैं कि over 1 million tons of zinc was being produced in India at that particular time. So no doubt it was considered as a metallurgical marvel in ancient India.
So apart from that, we are also having many living practices also. Ki apart from the archaeological practices, archaeological remains, there are also certain living practices कि ऐसे बहुत सारे folk arts हैं, folk songs हैं, dance forms हैं, जो कि एक हमको इंडिकेशन देते हैं ऑफ द culture of the practices of that particular time. महाराष्ट्र से ही आप देखें कि कुछ दो एग्जांपल्स आई वुड लाइक टू शेयर कि यू ऑल मस्ट बी नोइंग मोर अबाउट इट. जैसे आपका एक पावड़ा जो है, दैट इज द मराठी पोइट्री ऑफ वेलर, है ना, एक थिएटर, एक फोक थिएटर का एक पार्ट है. Similarly, Dashavatara hai. So these are all some ancient, you can say, living practices. There are many more practices like whether एक जो केरला का है, that is the Kutiyattam कहते हैं. This is also संस्कृत में रहता है, क्लासिकल ड्रामा है, but with local traditions. और यूनेस्को ने इसको 2008 में it has been considered as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. सिमिलरली ना केवल हिंदूज में, इवन मुस्लिम्स के भी ऐसे बहुत लिविंग ट्रेडिशंस हैं. फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द ट्रेडिशनल वेडिंग डांस दैट इज परफॉर्म्ड बाय मुस्लिम वुमेन, दैट इज नोन एज द उप्पाना. और ये जो उप्पाना है, दैट इज रिसेम्बल्स द काईकोटिकली विच इज प्रैक्टिस्ड इन वुमेन ऑफ केरला, जो हिंदू वुमेन फॉलो करती है, और उससे बहुत सिमिलर है ये उप्पाना. और उप्पाना अगर आप देखेंगे तो इट इज अ मिक्स ऑफ दिस काइकोटिकली एंड दी ritual dance rituals which are prevalent in the Arabian country. So that is, you can say, a beautiful amalgamation of the cultures from the two areas. Similarly, एक और जो क्रिश्चियन फोक डांस, सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी एक डांस फॉर्म फॉलो करती है, दैट इज द मरगम कली. So that is also one of the living traditions of this area. And similarly, जो मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं, कलरी पाइट है, तो ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे. हर रीजन को आप अगर इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व, एवरी रीजन यू विल फाइंड सम traditions which has a very distinct style, which has very distinct utility, and which are still useful in the present context. तो इसके बाद आता है जो लिटरेरी सोर्सेज हैं. लिटरेरी सोर्सेज में जो टेस्टिमोनियल्स या सेकेंडरी सोर्सेज अगर आप देखें कि जो ट्रैवलर्स उस टाइम पर इंडिया में विजिट किए, फॉर एग्जांपल वन वाज द आइट सिंह, दैट इज द चाइनीज ट्रैवलर. He didn't knew Sanskrit, but he went to Sumatra, he learned Sanskrit, and he then studied the Indian text. And it is his observation that India is the celestial storehouse of knowledge. सिमिलरली, जो अल अंदलौजी एक जो अरेबियन विजिटर था, उन्होंने अपने कैटेगरीज ऑफ नेशन जो 11th सेंचुरी में लिखा था, उसमें ही हैज ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट नेशन टू हैव कल्टिवेटेड साइंसेस is India. Over many centuries, all the kings of the past have recognized the ability of the Indians in all the branches of knowledge. इसी तरह से जो मैं वुड स्टील की बात कर रही थी आपसे, वुड स्टील जो था, दैट वाज यूज्ड नॉट ओनली फॉर द मेकिंग ऑफ द स्वर्ड्स, बट इट वाज आल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कटलरी and also the edge instruments for surgical purposes. So this is one of the statements of Sir Joseph Banks, who was the president of the British Royal Society at that time, who said that I have at this time a liberal supply of woods, that is wood steel, and I intend to use it for many purposes. If a better steel is offered to me, I will gladly attend to it. But the steel of India is decidedly the best I have yet met with, excellently adapted for the purposes of fine cutlery and particularly for all edge instruments used for surgical purposes. तो इस तरह के बहुत सारे जो टेस्टिमोनियल्स हैं, सेकेंडरी सोर्सेस से भी हमको ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है. तो जो लिटरेरी सोर्सेस की जब हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि दिस लिटरेचर इज प्रेजेंट इन many languages, many Indian languages, but no doubt जो manuscripts हैं वो
मैक्सिमम जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमको मिलते हैं देज आर इन दी संस्कृत, प्राकृत और दी अपभ्रंश। और इसके अलावा आप देखें हिंदी है, तमिल है, गुजराती है, पर्शियन है, कन्नड़ा कन्नड़ा है, मलयालम है, उर्दू है, तेलुगु है, मराठी है, इवन तिब्बतन है, सिन्हलीज है। इन सारे लैंग्वेजेस में भी हमको बहुत सारे इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। और आईकेएस के जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, जैसे जिनमें आपके वेदा है, वेदांगास है, इतिहासास है, देन स्पेशलाइज टेक्स्ट है फॉर डिफरेंट साइंसेस, चाहे वो अष्टाध्यायी हो, चरक संहिता हो, आर्यभट्टियम हो, लीलावती हो, रसरत्न समुच्चय हो, काव्य प्रकाशा है, तर्क समग्र है। इसी तरह से कुछ एनसाइक्लोपीडिक वर्क्स भी हैं लाइक अर्थशास्त्र, बृहत संहिता, मानव उल्लासा, युक्ति कल्पत्रु, काव्या, सुभाषितास, ऑल दीज आर द important literary sources. So even the government of India, that under the Ministry of Education, they have established this IKS division. और ये जो IKS division है, इसके थ्रू different activities are being conducted for the promotion on the of the Indian knowledge systems, and they also provide funds for the establishment of the IKS centers in your universities, and they also sponsor the research projects also. So if you so normally इसका कॉल जो आता है वो February March में आता है, तो you can visit this website of IKS division. There is also, you will see that there is a very literatures भी आपको वहां पर मिलेंगे, and they are also list of projects that has been sanctioned so far. You can just go through it. और आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं आपको डिजाइन करने हैं। और नेक्स्ट कॉल जब होता है तो यू कैन certainly apply for financial assistance for conducting the research in this area. So just summary में I would like to again like to emphasize that इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है एक लेबल है, इट इज नॉट वन डिसिप्लिन। और ये जो रेपोजिटरी है ये हमको बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हमको दिखाई देगी। इट इज प्रेजेंट इन मेनी साइंसेस ओवर फिजिकल एज वेल एज लिंग्विस्टिक लैंडस्केप्स, एंड फेमिलियरिटी विद इट, फेमिलियर होना जरूरी है क्योंकि उसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी है और एग्जिस्टेंशियल सिग्निफिकेंस भी है। और अनडाउटेडली देर इज नो हार्म कि कहा भी जाता है कि इफ यू वांट टू लुक अहेड, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जायंट्स, naturally you will be able to see much far ahead. And that is why you can see this national education policy is envisioning an education system which is rooted in the Indian ethos. So with this, thank you very much for patient listening. And if you have some questions, queries, or some observations, you are most free to share it. Yes, any questions, queries, any observations? Maybe a quick remark, something. No questions? No.
Participants having some questions, you can please ask to Professor Suresh ma'am. Or even some observations if you want to share something from your perspective. Please, anyone. If there are no questions, then you can confirm we can conclude this session because two possibilities are always there. I think, ma'am, we should conclude if you could. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. On behalf of Malvi Mission Teacher Training Center, Sant Gadge Baba, Amravati University, and Anuradha College of Engineering and Technology, Chikhli, I extend my sincere thanks to Professor Preeti Suresh ma'am for such a wonderful and insightful session towards this Indian knowledge system. We are luckily thankful to you. We are luckily thankful, ma'am, because you have shared your expertise and the knowledge that should be inculcated in our upcoming syllabi and the curricula for development of domain-specific courses in this with associated with this vertical of the Indian knowledge system in our upcoming curricula. I once again extend my sincere thanks for your precious time and thought-provoking session here. And with the kind consent of Suresh ma'am, I would like to declare that this session will be over here. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you very much for this opportunity and for the patient listening. Thank you. Thank you very much. Participants, we will move for the next session. You can please stay be connected. Within 2 or 3 minutes, we will start with our session.
Hello, Professor Faiza Abbasi ma'am. Hello. Hello, Professor Abbasi ma'am. Yes, hello, good evening. Yeah, good evening, ma'am. Good evening. Shall we start, ma'am, if you could permit? Yes, yes. Actually, I was waiting for you to give me the rights to present, sharing. Yeah, ma'am. Right now, I have provided this access. So, friends, good afternoon once again. As we have earlier discussed before the starting begin of this session, that the today's session have been split into the two different parts. First part we have almost completed, and now we are moving towards the different another part of the today's session. That is the holistic and multidisciplinary education. Friends, this entire policy has paid more emphasis towards the multidisciplinary education and particularly holistic in the multidisciplinary education. And you know that in the today's era, we are discussing in not only in our teaching learning but also in the research, transdisciplinary, multidisciplinary, and the interdisciplinary approaches. And our most of the syllabi and the curricula has been designed in that way in that way that the student shall migrate from one faculty to another faculty. And this is a very important concept of this national foremost pillar of this national education policy. And to discuss this important vertical, we have with us a very great, eminent, and scholarly personality, Professor Faiza Abbasi, ma'am. Ma'am, first of all, I extend my warm welcome to you to this flagship program and particular to this session. We have launched this program in collaboration with our one of leading institution, engineering institution, Anuradha College of Engineering and Technology, situated in the Chikli. And this program comprises from the three to four different domain of participants, particularly in the engineering and technology, pharmacy, Ayurveda, and education. So, this is the multidisciplinary batch for this time here. Friends, Professor Faiza Abbasi ma'am is at present serving as the professor and the program director at the UGC Malviya Mission Teacher Training Center at Aligarh Muslim University, situated in the Aligarh. That is the government of India's Ministry of Education Center. Ma'am is basically start her career from the Department of Wildlife Sciences at the Aligarh Muslim University. She has 2 decades of experience in this field of higher education, and she is extensively conducting the extensive research on the aviation ecology, overseeing the organization of hundreds of refresher courses, orientation program, faculty induction program, and skill development program, managing and mentoring the thousands of higher education faculty across the diverse discipline. She is currently leading the orientation and the sensitization program of the national education policy, promoting the policy awareness and the academic transformation in the higher education. She has she is the program director of the English Access Micro Scholarship Program for the underprivileged children in the AMU school, funded by the US Department of the States. She has regularly delivered the lecture across the India on the environmental ethics, academic leadership, and the interdisciplinary education. She has completed the educational leadership certificates from the following from the state Ohio, the Ohio State University, USA, Monash University, Australia, and the IIM Udaipur, and ODL courses from the Harvard and edX and the Writers Bureau. Writers Bureau. She has author of the 16 books and the numerous research paper and and the news column that has been published in the reputed newspapers as well as the national and international journal. She has reviewed for the several reputed academic journals. On the Swam platform and the YouTube video, she has generated thousands of views, and she is the speaker at All India Radio and the Jashne-e-Rastka. She has recipient of the couple of awards that eminently includes the Nishane-Urdu UP Governors Medal, RBTC's 100 Inspiring Muslim Women of the Uttar Pradesh Honor, and the Indian Forest Best Paper Award. She has instrumentally engaged and visited different countries and completed this most prestigious program of the Ministry of Education, that is the LEAP,
and she has associated with the different organizations also. So friends, with this, I once again extend my warm welcome to Professor Abbasi ma'am. And right now she she is enlighten us on this very much important aspect of this national education policy, that is the multidisciplinary and the holistic education. So without taking too much time, ma'am, I again extend my warm welcome to you and request you to please start with your session. Ma'am, please. Thank you so much. I'm just taking some help in presenting my screen. This is a new desktop actually that I Yeah, ma'am, please. Yeah, so Mr. Zedi is here on my request. He's looking into how I can share I want to share this PPTs here. So quite a few participants. 84 is a good number. 2786. रिकॉर्ड नहीं करना, लेटर कर दो। वो क्रोम वापस आ गई ना। अब आएगा, आ गई ना। हाँ, ये आपको ये करना है? नहीं, हमें वो गूगल डॉक्स नहीं खुल रहा है तो उसको डाउनलोड कर दो, कीनोट से खुल जाएगा। Participants, can you see the screen? Yes, ma'am, it is visible, ma'am. Yes, it's visible, ma'am. Okay, and the screen is changing also, no? Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Yeah. So much. There are some things only digital people can do, normal people can't do. Actually, this is a new desktop. So thank you for that welcome. And participants, I'm grateful for your presence here. In this one session, we are going to look at holistic and multidisciplinary education in the perspective of the national education policy. You must have attended several other lectures organized by the UGC MMTTC at the BGSBU Amravati University, and you must have by now got some idea of what kind of changes the national education policy wants to bring so that the desired outcomes of access, equity, equality, accountability, affordability, accessibility, etc. can be achieved. One of the many aspects of the national education policy happens to be holistic and multidisciplinary education. Holistic and multidisciplinary education is not a new concept. It has been there for quite some time. How the policy includes it in its vision is something for us to learn and to imbibe, and how so far the world has been looking at it and the world has also been benefiting from it by the merger of disciplines and the collapse and the decline of the disciplinary structures. So friends, let me first begin with some important quotations that I want to bring to your knowledge so that you are convinced of the importance of holistic and multidisciplinary education. The first and foremost being that new knowledge exists at the intersection of two disciplines. So for you,
for your organizers, for me, for all of us, creation of new knowledge happens to be the primary objective for us, happens to be the raison d'etre for being in the area of higher education, teaching, higher education research, higher education based outreach and community service, etc. Now, this new knowledge creation is not possible unless and until intersections of two disciplines have been worked out. Unless and until disciplines intersect. That's how new knowledge is created. So from our disciplinary structures, we have to evolve towards intersections where new knowledge is created. Another important fact about problem solving is that all ground level, real world problems, problems that matter, problems that deserve to be solved, they require an approach that constitutes the involvement of more than two disciplines. Okay. In other words, it has to be approached with more than two disciplines. So, what do we do now? We have learned to strive and thrive and flourish and perform in our own disciplinary boundaries, within our own disciplinary boundaries. And if you see the first slide, you will see, look at this round structure. What is this structure? It is a silo. So we have evolved in our own silos. And what we need to do now is we need to come out of the silos of disciplines. And we need to bring about a change. Now, I'm going to give you the example of one very riveting personality. Recently, the New York City has got a new mayor. His name is Zohran Mamdani. You all know him. You must have seen him on your Instagram, on your, even if somebody doesn't want to see him, he appears there. He has done such a good job. Now, Zohran Mamdani is a polymath because he has diverse talents. What he is doing is not exactly related to his degree. He is an exemplary polymath character for many fields. So his work reflects a truly multidisciplinary approach. Just give me 1 second, friends. I have a paper. Just give me a second. So he is somebody who truly reflects a multidisciplinary approach.
because his versatility promotes holistic academic engagement. Look at his multidisciplinary profile. He is a living polymath dream, proof you can do it all and mean it all. See, Zohran, in a world that tells us to specialize, he is showing that fluidity is the revolution. Why? He began with poetry. He comes to policy. He comes to filmmaking. His mother is a great filmmaker, very proudly an Indian. Then he comes to becoming an assemblyman of New York. He comes to housing justice. So he is a living proof that creativity is not separate from change making. Creativity is the engine behind it. So earlier, the idea of a polymath, it used to be found in history books. But today, as the new generation connects disciplines instead of staying in one lane, it is resurfacing. Because this generation sees overlap as a strength and treats knowledge as a territory to defend, but as a knowledge not as a territory to defend, but as a terrain to explore. Knowledge is not a territory to defend, but a terrain to explore. And also, you can find in Zohran's story that it reminds us that polymath's real test isn't knowledge, it's selfhood. So to thrive is to have the audacity to be all of who you are, everywhere you are, because doing it all isn't the goal. Doing it with purpose is the goal. So that's how this wonderful Indian origin young man who becomes the first such person to be the mayor of New York, he fashions his career. No over specialization, no super specialization. That's what the NEP is talking about. That's what the NEP wants to inculcate in our academic curriculum throughout the higher education system. And the great thinkers of higher education, they concur. They also think the same way. Why to champion interdisciplinary studies? Because the political economy of higher education has changed in the neoliberal context. Today, you will not be funded by the government the way you were funded earlier. Now, governments are not ready to pay expensive professors and teachers for just transferring borrowed knowledge in the classroom. Something called epistemic rent seeking. The country doesn't want, the nations don't want. The political economies don't want in the neoliberal context. When you are creating something new, when you are only then
Political economies are there to fund your innovation, to fund your monetization of the knowledge created, to fund what you can teach. What new knowledge you can bring, what new solutions to the existing problems you can propose, what people can act upon. So, disciplinary structures in universities tend to impede intellectual innovation and obscure public access to knowledge. That is why it is considered that disciplines are necessary evils. The more necessary, the more evil. Disciplines are necessary evils. The more necessary, the more evil. And this is said by Steve Fuller, who is the author of the very famous and acclaimed book called The Academic Caesar, University Leadership is Hard, or University Leadership is Difficult, something like that. Steve Fuller says that. So now we have no other option than to become interdisciplinary, multidisciplinary, or cross-disciplinary. Now I'm coming to some opinion seeking from you. Participants, tell me, do you have any idea what is trans, inter, multi, cross, and intradisciplinary? Can you answer? Anyone? What is the difference between transdisciplinary and interdisciplinary? Between interdisciplinary and multidisciplinary? Between multidisciplinary and cross-disciplinary? Between cross-disciplinary and intradisciplinary? Please tell me. If you want to talk in Hindustani, you are most welcome to talk in Hindustani. But please talk. Any idea? What is inter, multi, cross, intradisciplinary? Can somebody please throw some light? Anyone? Any answers, please? Any participants? Any answers? Ma'am, trans means, is it changing the discipline completely? Trans means going outside the discipline. Discipline, okay. Yeah. So that was a very good attempt, Umesh Joshi ji. Thank you for coming up with that. So can you throw some more Then light? What could intra, others? intra means within the discipline, but Absolutely. with different subjects. Absolutely. Absolutely. Intra means within the discipline. Within the discipline. A small. Inter means as we are discussing like that some subjects from engineering background, some subjects from Ayurveda background, and basic discipline along with the basic discipline. Yes. That may be inter. Yes. Inter and multi, I'm confused a bit. Okay, thank you so much for that answer. You are absolutely Okay. Thank you, right. ma'am. Yeah, you're absolutely right. I will very easily, it's very easy to clarify the exact small slight difference between all of them. So anyone else would like to give it a try? Like Professor Joshi? Thank you, Professor Joshi. My pleasure, ma'am. Anybody else would like to give a try?
Okay. The answer lies in the next slide. With the help of these small line diagrams, you will be able to understand inter, intra, cross, multi, and transdisciplinary. Try to understand it in the context of discipline A, discipline B, and in this chart that I'm showing you, the common goal areas have been lined. So there is an overlap or area of knowledge, right? And this I have borrowed from Stember's description and arcsite.co.uk, right? Does it clear the picture for you? Take 2 minutes in trying to imbibe what is. तुम्ही दिसत नाहीये. Divya ji, are you saying something? हा तुम्ही दिसत नाहीये. Paused आहे व्हिडिओ. व्हिडिओ पॉज दिसतंय इथे. I think Divya ji, you are on. अरे शिभाषा असं बोलावं का? Please mute yourself, madam. नाही ना बेटा. मी स्क्रीनशॉट टाकू का तुम्हाला कसं दिसतंय ते? हम इन्हें कैसे म्यूट करें? कर सकते हैं? Okay. Okay, so participants, I'm requesting you to take 2 minutes, study this chart, and please try to understand this chart. Sorry. One minute. Yeah, please take your 2 minutes and try to understand this chart. I think somebody is on unmute by mistake. I'm not able to. Deepak Amboreji. Deepak Amboreji, can you please go on mute? आप unmute हो गए हैं गलती से सर. So let's have a discussion on intradisciplinary, disciplinary, cross-disciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary. To begin with, disciplinary. A particular subject in which you may have done your graduation in college or university, your post-graduation, that is a discipline.
I did MSc in botany. I studied all of botany. But during my master's program, when I reached the final semester, I was given 6 different intradisciplinary areas to choose from. So I decided to do plant ecology. Pathology is another area. Nematology is another area. The study of virus, it's another area. Taxonomy is another area. Ethnic botany is another area. But I decided to do plant ecology. That is interdisciplinary. Now, when you are done with your disciplinary and intradisciplinary college education, and you come to research, there is a new series of evolution that your research needs to take. First of all, in the area of cross-disciplinary. Viewing your own discipline from the perspective of another discipline. That is called cross-disciplinary. Say, for example, I wanted to protect the plants as an ecologist. I wanted to protect the plants in a certain protected area where I was seeing that the plants are not growing because of grazing by livestock of the local villagers. Now, I started looking at socio-economics of the rural population from the perspective of my discipline. These are poor people, they have livestock. They don't have enough to buy fodder for the livestock. So they set their cattle and livestock for a free roam, for a free range in the protected area. That was a cross-disciplinary perspective. Now comes interdisciplinary. Integrated use and synthesis of knowledge, methods, and approaches from different disciplines. Integration of 2 disciplines has to take place. Say, for example, a little bit of biology and a little bit of chemistry come together for the formation of a new discipline called biochemistry. A little bit of biology and a little bit of technology from the engineering college comes together and makes the new interdisciplinary area of biotechnology. So 2 disciplines have to integrate. 2 disciplines have to intersect
two disciplines have to interact. Disciplinary boundaries have to collapse. And a new area has to emerge. That is interdisciplinary. Now, what is multidisciplinary? Again, the idea is same. The intervention or the association of several disciplines. What is the slight characteristic difference between the two? In multidisciplinary, several disciplines collaborate, but no disciplinary boundaries are collapsed. But no integration of disciplines happens and no new discipline emerges. So now that new education policy has given choice, flexibility, and freedom to the students to choose for their own multidisciplinary course, we are not giving them a new discipline to study. A student taking admission in BSc Physics is also studying music and philosophy. That doesn't mean he's doing something other than BSc Physics. It just means that this student will have the ability to analyze, to assess with the help of the collaboration of two disciplines. First year he studies music, second year he studies philosophy, but he comes out with the graduation in research physics. However, in the end, this student will be the one who will most certainly be able to get more than two disciplines involved, be able to find an approach of more than two disciplines towards problem solving. From here happens the final evolution. What is this final evolution? The ability of a student, researcher, or academic to solve a problem by going beyond discipline. Discipline के बाहर चले जाएं आप. Transdisciplinary. Unity of intellectual frameworks beyond disciplinary perspectives. You might decide to go into politics and solve a certain problem that is related to your discipline. You might decide to go into theology. You might decide to go into civil society. And that's how you solve the problems. Sorry. So now I think I have made it very clear as to these small, minute, slight differences between how we approach disciplines for problem solving, how we engage with more than two disciplines for problem solving.
Somebody is Yes, on. ma'am, it's clear now. Somebody is on. Yes, Thank, yes. yeah, thank you so much. I hope now that clears the very minute difference that exists between these several approaches of engaging with more than one disciplines, and which we have just now seen. So shall we go to the next now? Have we all been convinced with the importance of multidisciplinarity in education, with the importance of holistic education, and what exactly multidisciplinarity in education is? Okay. So realizing that this is the need of the hour, this is how in the neoliberal context, in the postmodern, post-truth world, we will be conducting research, we will be giving solutions to problems. The NEP envisages a holistic and multidisciplinary education that develops the whole person. The whole person, including their intellectual, aesthetic, social, physical, emotional, interpersonal, humanistic, and moral capacities. So this will be achieved through a curriculum that integrates different subjects and disciplines, promotes practice learning, and emphasizes value-based education. So now we will see how value-based education has been integrated with the curriculum. So far, it was not considered to be a part of formal education. Value-based education was the job of families, was the job of the society, was the job of religious leaders. But this is for the first time in the history that we are introducing the concept of holistic education, which includes human values. The way holistic education has been enshrined in the Bhagavad Gita and other scriptures, which give us an idea of what is India-centric holistic living. As we see the development of the individual, the integrated development of body, mind, intellect, and soul, importance of physical and mental health, concept of Guru, Shishya, Parampara, Gurukul approaches of teaching, learning. So educational institutions of holistic learning like Takshashila, Nalanda, Vikramshila, which had a tradition of the Gurukul-based man-making and character building by building a teacher-pupil rapport, by following the philosophy of holistic education, which has also been propounded by great thinkers and leaders like Vivekananda, Sri Aurobindo, Rabindranath Tagore, and Madan Mohan Malviya ji. I'm talking to you from here in Aligarh, and I have drunk deep at the fountain of the educational philosophy of Sir Syed Ahmad Khan, the maker of this institution, one of the architects of modern India.
how right from the beginning, his philosophy was that we should have in one hand the book of science, in other hand the book of philosophy, and we should wear the crown of belief in God on the head. And that's what the NEP also wants. Now, in the second sub-theme, it talks about how multidisciplinary education and research, that includes art of critical thinking at cross, inter, and multidisciplinary levels, should be known to the teachers, and the concept of flexible and innovative curriculum like the dual degree, ABC, multiple exit, multiple entry, CBCS, and other projects from various disciplines, creating teacher education universities. The last sub-theme is a little elaborate, as you can see. Again, this sub-theme has two portions. One is on values, another is on personality, and the last is on environment and ecological balance. Meaning and concept of values and the classification of values and value education. Definition, purpose, and significance in the present world. Value system, salient values for life. Purushartha, dharma, artha, moksha, kama, truth, commitment, honesty, integrity, forgiveness and love, emotions, empathy, and the ability to sacrifice. So life skills, rational thought, courage and resilience, simplicity, tolerance, care, unity, inclusiveness, the concept of Vasudhaiv Kutumbakam, which says that the whole world is one family, social values, duties and responsibilities, peace and non-violence, scientific temper, qualities of a good citizen, etc., are the human values that we want to inculcate in the students. The ethics that define the character and conduct, the development of morality, instinct and conscience, moral strength, moral standard, absolute and relative ethics, nationality, patriotism, love to motherland and mother languages, self-analysis, out-of-box thinking, attitude, motivation, goal setting, short-term and long-term goal setting, time management, etc. The personality aspects that students need to learn. And last but not the least is my favorite. It's environment and ecological balance. As seen in Vasudhaiv Kutumbakam, which means one world, one earth, one family. The interdependence of all beings, living and non-living. Respect for nature, environmental conservation and enrichment, aesthetic sense, climate change, pollution, waste management, sanitation, biological diversity conservation, biological resource and biodiversity management, forest and wildlife conservation, and sustainable development and living. Now let us see the historical background of holistic and multidisciplinary education. It's an eclectic and inclusive movement that emerged in the mid-1980s as a response to the then dominant worldview of mainstream education. It's an educational paradigm that integrates the idealistic ideas of humanistic education with spiritual philosophical ideas. It incorporates
the principles of spirituality, wholeness, and interconnectedness, along with principles of freedom, autonomy, and democracy. So, holistic education theorists assume an integration of what most progressive and democratic movements in education have proposed should be kept separate in the name of spirituality and humanistic ideals. Now, while these principles may be combined philosophically into an ideal of education, the big question is that we need to answer. Could they be jointly applied to an approach of education? Now, although this is a departure from mainstream democratic movement, we have dared to take the road not taken. We have dared. It's not just a poetic manifestation. We're not just insinuating that it happens in poetry. It is a fact that sometimes when you take the road not taken, it makes a lot of difference. So India, the Indian higher education ecosystem is evolving in a direction like never before. Post NEP, it has finally stepped on the road not taken. It has finally decided not to follow suit. It has finally decided to chart its own path. Because as this great poet, Robert Frost, he said, and Robert Frost is a great poet. We have a special association with him as Indians because Pandit Nehru quoted him a lot in the parliament when he used to say, "The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep." This was again one of the wonderful compositions of Robert Frost. The same poet says, "Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both." Two roads diverged in a yellow wood, and two roads diverged in a yellow wood. Sorry I could not travel both, and be one traveler. So long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other. Then took the other, as just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled. And that has made all the difference. So when you take a road less traveled, when you embark on a journey
on the less traveled road, it makes a difference, and that may have made all the difference. So this is a concept that has been catching up. This is an example from the Ohio State University that I'm giving you here today. They already have integrative health training clerkships and advanced competency in integrative health. These are programs that are of multidisciplinary nature, interdisciplinary nature, that lead to integrative health education. And I saw this at the Ohio State University Wexner Medical Center, which offers many education opportunities through the Ohio State Integrative Health Program. They have the Department of Family and Community Medicine, wherein, as part of education and training, this program is running. There are some such programs in research also, healthcare research, of course. When healthcare is enriched with cultural sensitivity and delivered by a unified team of professionals working in tandem, the impact on patient health outcomes is profound. So keeping that in mind, a strong emphasis on multidisciplinary collaboration by involving students from diverse health disciplines united to provide, integrate, and cooperative care, resulting in better health outcomes. So this not only breaks down silos, but also champions a holistic patient well-being. So when healthcare is enriched with cultural sensitivity and delivered by a unified team of professionals, then this kind of collaborative and cooperative holistic patient care can be enabled. So we're talking about a culturally responsive healthcare. We're really looking at a team effort. So it starts with having a curriculum that's tuned into different cultures, and it needs everyone, educators and institutions, to be on board and contribute focused work. So in the world of healthcare education, we are talking about working together, being flexible, and making sure our educators keep growing too. One method to weave in culturally collaborative, open-minded opportunities that are insightful, knowledgeable, explorative, amazing, interesting, exchanging, enlightening, friendly, innovative, non-judgmental, of course, international, enriching, and they have to be multidisciplinary. One example I want to give you from the past about interdisciplinary research, multidisciplinary collaboration, and that is the Hardy-Weinberg equation. This is an equation that is found in all textbooks of UG and PG on genetics and evolution. So anybody doing a BSc zoology or a BSc botany and has a paper on evolutionary biology to study will be certainly doing the Hardy-Weinberg equation. How did this equation come into being? First, let us see what is this equation. I know nobody here is from genetics, you're all from an engineering college, but it is common knowledge these days that genetics, our genes, what we inherit from our parents, are responsible for the traits and characters that we carry in our phenotype as well as our genotype. Now, this law states that if there are only two alleles for a trait in a population, then the frequency of dominant and the frequency of relative allele will be 1.
So as in this case, purple is the dominant and pink is the recessive. So the recessive may not show, but the recessive is there, and together they make a constant, and that constant is 1. Now, it was very difficult for a geneticist alone to arrive at this conclusion and to propound this equation. It was very difficult. Now, how did it come into being? How did it happen? In Cambridge University, they have several clubs. Professors come out of their silos and meet and greet and interact and meld with each other in these clubs. A club has a great potential for hobnobbing of academics across disciplines, and that too in a very informal, open, and free atmosphere. So we need those inroads from our respective silos and look beyond the insular views of specialities and super specialities. Solutions to some real life complex problems lie out there. Actually, only a multidisciplinary approach can solve these problems, these ground level problems. So what happened was, a professor of mathematics known as Hardy. You know Hardy? Who was Hardy? Godfrey Harold Hardy. He was a great mathematician. He was the one who took Srinivas Ramanujan to the Cambridge University, where he, a mathematical genius, a protege, he came up with all those theorems that the world is still using. Now, Hardy used to play cricket at the Cambridge University, and he was a mathematician. One of his many colleagues who played cricket with him was Weinberg. Weinberg. He was Wilhelm Weinberg from Germany, who was a life scientist, who was at the Faculty of Life Sciences, and he was finding it difficult to solve some of the equations of genetics because Mendel, Gregor John Mendel, who's known as the father of genetics, had left some untied ends in his laws of genetics. So when Hardy and Godfrey Harold Hardy and Wilhelm Weinberg, when they met, it was happenstance, it was just happenstance that they came across this issue. They decided to solve it together. They sat on a table, each one bringing its respective expertise from the respective field on the table. No merger of disciplines, no emergence of new discipline, no intersections of disciplines, but yes, of course, a collaboration of disciplines, a cooperation of disciplines. And we came across the Hardy-Weinberg equation, where all Hardy did was that he introduced a constant.
All Hardy did was that he introduced a constant. So this is one of the finest examples of multidisciplinary research in large multidisciplinary education and research universities. So one of the implications of the NEP is also this, that all institutions in 15 years' time, through their institution development plans, after graded accreditation and graded autonomy, will become MERU, 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 multidisciplinary education research universities. So the Cambridge University is a MERU. The Aligarh Muslim University is a MERU. The Sant Gadge Baba Amravati University is a MERU, because such multidisciplinary collaborations can happen only in a MERU. So the higher education system in India, especially post NEP, is rewarding multidisciplinarity. The NIRF ranks higher education institutions based on various parameters like teaching, learning, research, outreach, innovation, etc. And it also encourages institutions to strive for excellence in all these areas. The National Research Foundation, it promotes research, innovation, and entrepreneurship, and provides funding and support for research projects, including interdisciplinary research. The National Educational Technology Forum promotes the use of technology in education, including online learning, digital textbooks, and virtual labs. And this can facilitate multidisciplinary learning and access to resources from different fields. The National Medical Commission is responsible for regulating medical education in India. It has introduced reforms to make medical education more holistic and patient-centric, including a focus on community health and preventive care. Just like we saw the example of the Monash University collaborative research project for holistic patient care, and also the integrative medical education in the Wexner Medical Center at the Ohio State University. For teacher education, we have NCTE. This has also been working to improve the quality of teacher training and ensure that teachers are equipped to deliver holistic and multidisciplinary education. Now we have the NSDM, a project very close to the heart of our Prime Minister. The NSDM aims to provide vocational training and skills development opportunities to young people, and this can help them acquire practical skills that are relevant to the job market and that complement their academic education. NEP is all about flexibility, freedom, choice to the students. So the CBCS and now the multidisciplinary programs, where we have so many VACs and BOCs, etc., are also a part of the NEP envisioned flexible curriculum with the help of internships, with the help of stipendiary or non-stipendiary employments to the students as part of the semester, as part of the curriculum. NEP is also increasing community engagement by introducing experiential learning, which the students get to experience quite a lot during the internships. Internships are built in the degree courses to give a practical experience and an idea of the real world problems. Research and innovation is being promoted, industry academia linkage in reducing the industry academia divide, that is being promoted, and a well-rounded education for holistic development with the right values and with the right morals is also being promoted. I just spoke to you about the MERU, that is the Multidisciplinary Education and Research University.
And finally, my friends, this is a document of the UGC, which is called Curriculum and Guidelines for Life Skills. Jivan Kaushal 2. Jivan Kaushal 2. Considering and acknowledging that students have to learn much more in the area of life skills than what they learn in degree programs in their classrooms. This document has been designed. So life skills has been classified into communication skills, professional skills, leadership and management skills, and human values. If you're interested, you can, of course, download this document and you can start a course or start a program, or in one semester, in more than one, and you can undertake in your respective colleges training upon communication skills like listening, speaking, writing. I would like to add reading in this, and also digital ethics, like professional skills, interviewing, social and cultural etiquette, brainstorming, cognitive and non-cognitive skills, leadership and management skills like design thinking, the idea of leadership, innovation, entrepreneurship, entrepreneurial skills, and finally the universal human values: love, truth, peace, service that comes only because of sacrifice, universal human values, without which we find no value and no worth to professional or technical or scientific education. So with that, friends, I'm bringing an end to my what I had to say with you, but I'm still here for another 5-10 minutes. If in case somebody has a question, in case somebody has a query, or if you want to add something to what we just said, I will be very happy to take up. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ma'am, one question is from the YouTube chat. That can you please describe the difference between interdisciplinary, transdisciplinary, and multidisciplinary? You should categorize 3 different terminologies. Yeah, so we just did an entire slide on this. Okay. As I said, in interdisciplinary, 2, 3, 4 disciplines, they come together and find a common area. There is a collapse of disciplinary boundaries. There is an integration of disciplines. There is an intersection between disciplines. And there is also the possibility of the emergence of a new discipline. That is interdisciplinary. I gave the example of biochemistry. I gave the example of biotechnology. These are all, I am teaching these days eco-theology. These are all interdisciplinary perspectives. On the contrary, in multidisciplinary, several disciplines bring together their expertise on the table, but they do not integrate. New discipline does not emerge. They do not intersect. They only collaborate for some time. They only cooperate for some time, and then they go back to their disciplines. So Hardy-Weinberg law, one mathematician and one biologist came together, solved the equation, went back. But Faiza Abbasi, eco-theologian, comes from the wildlife department, goes to the Center of Quran Studies, and finds a new discipline that is called Islamic environmental ethics. And then a new discipline emerges because there is integration of 2 disciplines. A little bit of something from this has been taken and a little bit of something from this has been taken, and a new discipline has been formed. Transdisciplinary is when solutions to problems
are found by going outside the disciplinary structure at all. You don't remain in your university, you don't remain in your college, you don't remain in your department. You go to the industry, you go to the policymakers, you go to the judiciary, you might be going to civil society, NGOs. If you're interested in outreach, if you're interested in a new product, innovation, invention, whatever, however you want a solution to a problem reached at, you switch from the discipline to the non-discipline. That is transdiscipline. So I hope now I'm clear. Thank you, ma'am. Yes, participants, having any questions or the queries? If you have any questions or the queries, you can ask to Professor Abbasi, ma'am. Either we can conclude the session. Yeah. No, ma'am. I think no more questions. So if you could permit, can we conclude, ma'am? Yeah, I would like to thank Gopal Thing ji, Umesh Joshi ji, Abhay Kumar Sakhare ji, Kishore Rodge ji, Mohammad Junaid Sheikh Shabir, Bharat Dore, Shankar Lokhande, Jawad Ali Khan, Pankaj Shethe, Abhay Kumar Sakhare, Tejas Sharma, Shripad Kulkarni, NV Ravi Shekhar, Nilesh Wagh, Akash Magar, Rajesh Mapari, Nameen Manger, everyone, I would like to thank you for your wonderful comments. Mahesh Deshmukh ji, Mohammad Junaid ji, Arif Sheikh ji, thank you very much for your comments. Madhu Rani ji, thank you so much. So now you can bring it. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. On behalf of Malvi Mission Teacher Training Center, Sant Garge Baba, Amravati University, and all participants from this particular flagship program, that is NEP Orientation and Sensitization Program, I extend my sincere thanks to you, because I do that the MMTTCs are undergo in the third-party evaluation, and rather than you are so busy in that particular program, but you have provided your precious time and thought-provoking session here. We are really thankful to you, ma'am, for your time as well as your thoughtful process that you have elaborated here. And definitely we will assure that in upcoming days we will inculcate your inputs in our drafting our curricula and the syllabi for our particularly this NEP related aligned syllabi. So I once again extend my sincere thanks. I also extend my sincere thanks to all the participants for their patience listening and active engagement, and with the kind consent of Professor Abbasi, ma'am, I would like to declare that this session will be over here and we'll meet tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you, and thank you, everyone. Thank you so much. Good night and God bless everybody. Thank you.